It has been an old strategy to keep enemy borders underdeveloped. The same tactic is employed in Aarey, Mumbai by keeping its roads underdeveloped despite years of protest. Doesn't it make you wonder which crimes are concealed behind the curtain of broken roads? Or would you be surprised to learn that merely 1.5 kilometer of road required the Hon'ble Bombay High Court's involvement and yet the work has not yet started? Let's first delve into one of the confrontations in which local residents believe to be one of the biggest causes of broken roads. गरीब लोग घर धोने आते हैं और राइल फॉर्म का पूरा बर्न नहीं चल रहा ना, तो पूरा बर्न नहीं होगा ना, माल बाहर खाली नहीं हो रहा है, इसके लिए पूरा इधर खाली हो रहा है। वो एक सीन होगा ना, बाहर लेकिन नहीं सजे टेम्पर से इधर रोड का रोड ही खाली हो रहा है। The man identified as Akhtar Ansari, accused of dumping construction debris on Aarey roads while local residents fight in the courtroom with pen and paper. Jai Sri Ram. My name is Satyam Ganji. I am senior citizen, 63-year-old person. The road is in very pathetic condition. The road gets repaired on and off, and every time they get repaired, the second time it goes to worst. Later, I submitted a application to Senior Inspector Aarey Police Station with few of my senior residents. We told them, please take an action. That happened in October 2022 and now January. Nothing happened. I have a lot of respect to police and judiciary. Then I saw there is a writ petition filed by ex-serviceman who served in Indian Navy. His name is Vinod Agarwal. I come across, then I am following up that case. I went to High Court probably more than 15 to 16 times. Every time the hearing was there. I think his hearing was started of 10th January 2022, almost 2 years completed. There was almost 25 to 27 hearings took place, but nothing has happened. The road is in very, very bad condition. I am a senior citizen. I cannot travel on this road either by walk, either by auto, either by bus. We are having a terrible problem on this road of 1.5 kilometer stretch only. We are not asking 45 kilometer of our internal road. No. The order is so simple, issued by Hon'ble Chief Justice of Mumbai High Court of highest order, issued on 2nd August, to make this road motorable. And even if the funds are not there, he asked to seek the funds and get it repaired. Still, almost August, September, probably 6 months over, nothing has happened. And I do not really understand what is happening. Is there a contempt of order issued by Hon'ble Chief Justice? They have to repair for thousands of people who are traveling this 1.5 kilometer stretch of road, Panchvati to Mayur Nagar. And one more thing, BMC Municipal Commissioner Mr. Iqbal Singh Chahal, he also was in the High Court. He made a good presentation that there are a lot of entities in Mumbai or in Maharashtra looking after the roads. If all the roads are handed over to BMC, I will take the responsibility to repair and there will not be any complaints on the pothole. That's what he made a good presentation of 45 minutes in the High Court conference room in front of Chief Justices. That was probably in April 2022 or somewhere. I don't know exactly, but I got all the orders. Later on, coming back to the responses and communication between various arguments and various hearings of 8 to 10 hearings, on 2nd August 2023, Justice, I remember his name, Justice Devendra Upadhyay and Justice Aarey Doctor, they made a clear-cut order and appointed a committee. I can name it. The committee comprises Secretary Dairy Development, Government of Maharashtra, Secretary Government of Forests, Secretary Roads, Chief Engineer, BMC, and Senior Level Expert of Environment and in Nagpur, and Chief Executive Officer Aarey Colony. Such high talented people were in the committee and they have been told to study it. But in that order, Chief Justice specifically mentioned to make this 1.5 kilometer road from Panchvati to Mayur Nagar motorable
so that people can travel, irrespective of handing over this road to BMC or not. If the funds are not there, please seek the funds from the state and get it motorable. Until then, the committee report comes, then we'll solve the problems. But PWD or RSCO just neglected this executive order issued by Chief Justice, Mumbai High Court. I do not know what is the reason on that. I would like to introduce my resident colleague who is also traveling on this road. He is Mr. Hitesh Kachru. He is basically from Kashmir. He is a Kashmiri Pandit. And please. नमस्कार। हम लोग काफ़ी समय से इस रोड के लिए पिछले 10 साल से अथॉरिटीज़ को, RACO को, PWD को लेटर्स, मैसेजेस, कॉमन लेटर्स, सोसाइटीज़ की तरफ से लेटर्स, MLA को, MP को लिख रहे हैं, लेकिन इस रोड को ये लोग कभी सिर्फ एक लेयर डाल के चलाते हैं और वो पहली बारिश में ही वॉश आउट हो जाती है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और बहुत हैवी ट्रैफिक है, स्कूल बसेस हैं, यहाँ से टैंकर्स आते हैं, बिकॉज हम लोग के पास पानी नहीं है, सप्लाई म्यूनसिपल वाटर है नहीं, जिसकी वजह से वाटर टैंकर्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, बसेस आती हैं, एम्बुलेंसेस आती हैं। इमरजेंसीज़ में लोगों की स्पाइन कॉर्ड्स ख़राब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, मसल्स डैमेज हो रही हैं सीनियर सिटीजन्स की। लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए उस रोड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो गया है और बहुत वर्स्ट कंडीशन है। और इसी 1.5 किलोमीटर में इतना धूल है, इको सेंसिटिव जोन होने के बाद भी इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि वो सब इनहेल करते हैं और थ्रोट प्रॉब्लम सबको फेस हो रही है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल बसेस में जाते हैं, स्कूल बसेस कोई AC बसेस नहीं होती हैं, ओपन बसेस होती हैं, उन सबको खांसी आती है, सब बीमार होते हैं और वो लाइफ बहुत पेनफुल है हम लोगों की, पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा है। और डिफरेंट अथॉरिटीज़ को कनेक्ट करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो फाइनली कलेक्टिवली हमारे यहाँ मिस्टर विनोद अग्रवाल ने एक हाई कोर्ट में केस फाइल किया और जिस केस के अंडर पिछले 2.5 साल होने को आए हैं, लेकिन हेयरिंग पे हेयरिंग वो NGO उसके अंदर इंटरवीनिंग एप्लीकेशन फाइल कर रही है, जो जिस NGO का उस रोड से कोई भी किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है और ना ही वो कोई ऐसी चीज़ हम मांग रहे हैं जो कोई इम्पॉसिबल हो या जस्टिस में नहीं हो। जब सारी इंटरनल रोड्स आरए की जो है डेवलप कर दी गई हैं तो सिर्फ वाई वी आर ओनली डिप्राइव्ड ऑफ दिस 1.5 किलोमीटर। सारी इंटरनल रोड, RACO के घर के बाहर देखिए आप, क्या बढ़िया रोड बनी हुई है, वही टार रोड बाकी जगह है और वही टार रोड RACO के बंगलों के पास है। आप RACO बंगलों के रोड से आप निकल के देखो, आप न्यूजीलैंड हॉस्टल से बाहर से निकलो, आप देखो कितनी स्मूथ रोड्स हैं, वो कभी वॉश आउट नहीं होती बारिश में, रेनी सीजन में कभी वॉश आउट नहीं हो रही है। लेकिन यही 1.5 पिछले 10 साल से वही हर बारिश में वो वॉश आउट हो जाती है, जो हमारा मेजर कंसर्न है। और जहाँ पे 40,000 से ज़्यादा 30,000 प्लस रेजिडेंट्स रहते हैं, वो रेजिडेंट्स इतने पेन में हैं कि जो बकायदा अगर आप फिजिकली आप हमारे साथ चलिए, आप रोड की कंडीशन देखिए, ट्रैफिक की कंडीशन देखिए, 1.5 किलोमीटर की रोड को कवर करने के लिए 30-35 मिनट्स लगते हैं। आप वॉक भी करोगे ना तो आप स्ट्रेट वॉक नहीं कर सकते, इतने पॉट होल्स हैं, 1-1 फीट 1.5 फीट के पॉट होल्स हैं। पूरी बस, BST बस देखिए, आगे बम्पर उसका डैमेज हो जाता है क्योंकि वो पॉट होल्स इतने ज़्यादा हैं। कार्स के साथ भी यही हो रहा है, कार की जो सिडान्स हैं वो सब की लगती है, बसेस की हालत ख़राब है। स्कूल बसेस देखिए, बच्चों को इतने जर्क्स आते हैं कि वो सब उनको भी आज से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जो अचानक एक NGO अपना इंटरवीनिंग एप्लीकेशन एंटर करती है और वो ये रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को कि ये 1.5 किलोमीटर का जो रोड है उसको कंक्रीट रोड ना बनाया जाए क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन है। 1970 ऑनवर्ड्स आप RACO के ऑफिस के बाहर बगल वाली रोड्स देखिए, यहाँ पे हमेशा से कंक्रीट रोड्स ही थी, आज भी वही रोड चल रही है जो सन 1970 से बनी हुई है।
मेन रोड जो आरे की है, जो बीएमसी ने टेक ओवर कर ली है, वो रोड भी कंक्रीट की पहले भी बनी थी, अभी फिर पूरी कंक्रीट रोड बन रही है। तो एनजीओ को खाली इसी 1.5 किलोमीटर के लिए कंक्रीट रोड का ऑब्जेक्शन क्यों है? क्या रीजन है इस ऑब्जेक्शन का? जब बाहर बन रही थी तब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी जब रोड बनी रही थी तो गणेश उत्सव का विसर्जन हो रहा था और उस विसर्जन में इन्होंने एक ईमेल भेजी अथॉरिटीज को, और अथॉरिटीज ने वॉर फाइटिंग इमरजेंसी की तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ पे विसर्जन नहीं करेंगे। क्यों? वन शक्ति के पीछे कौन लोग हैं जो उसके ईमेल्स को एंटरटेन कर रहे हैं? क्यों अथॉरिटीज उसके ईमेल्स को एंटरटेन कर रही है? आखिर है क्या ये? कुछ तो है जो पर्दे में है, उसको एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। क्यों वो 1.5 किलोमीटर के पीछे ही पड़े हैं? The Crimeophobia team visited Ground Zero to assess possible reasons behind the objections to the development of a 1.5 kilometer road. It is strongly presumed that the primary cause of these objections stems from the fact that this particular stretch contains a significant number of Hindu temples. Interestingly, a long concrete road in the exact connecting area did not face objections for construction. Instead, a ban was imposed on Ganesh Utsav celebration and idol immersion at lakes connected to those concrete roads. The evidence was also concealed and the courts were misled, as no one mentioned to the Hon'ble High Court that the approach roads towards the Aarey lakes are completely closed off for the construction of concrete roads. However, since temples cannot be relocated from this 1.5 kilometer stretch, the anti-Hindu lobby, along with environmentalists, is objecting at the cost of everyone's physical and mental health. This isn't concluded yet. The activists and the environmentalists are least bothered to even write a letter in the context, even though the dumping of debris is part of the stay order from the Honorable Supreme Court of India under its suo motu case towards felling of trees of Aarey Mill Colony. The selective politics is evident till today, as the Save Aarey protesters are very well aware of the current position, but their protest and posters are only seen on the developed roads and not on these broken roads because of hidden agendas. The entire government linked to Aarey, the courts, the environmentalists and other experts were well aware that the roads are not just broken, but they don't exist whatsoever. Yet the so-called environmentalists prefer to target only Hindus by banning the Ganesh Utsav in Aarey, in which celebrations and idol immersion were both prohibited. A logical mind would ask about how Lord Ganesh idols would be transported to the Aarey lakes when the roads didn't exist, was literally closed, but none of it was highlighted during the banning proceedings. It's not just Ganesh Utsav ban in the name of environmental concerns, but even the religious festival celebrated mainly by Tamilian Hindus suffered. While the rituals already make them suffer physical pain, the RACU and their teams left no stones unturned in making them suffer even more for pulling their chariot and walking barefoot with needles and hooks attached to their muscles of the back, face and other body parts. The political fiesta continues to confuse who is in power, but as per the reports and court proceedings documents, it is clearly highlighting that the Mumbai Council had agreed to develop the roads, but the funds had to be allotted by the Aarey Milk Factory, referred to as Aarey CEO. Various reports have already confirmed that the Aarey CEO has been anti-Hindu, due to which he takes no efforts and they have no fear, even with the contempt of court order, in which even a committee was ordered by the Bombay High Court. While the blame game continues, Akhtar Ansari continues to work under the royal palms, as he has already managed to damage all the roads which have Hindu temple and centers, which also troubles thousands of residents of all faiths. Ansari is also allegedly involved in constructing various slums inside the Aarey forest. Upon verification by the Crimeophobia team, it has been confirmed by the officials of the local builder, Royal Palms, that Akhtar Ansari is indeed their full-time payroll employee. Nevertheless, it is not confirmed whether the construction debris dumping on the roads of Aarey is from the builder or Akhtar's own illegal construction business, which flourishes below the nose of what is called the Aarey Authority. Here are a few moments from Akhtar Ansari's illegal construction business that was confronted by other local residents. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध झोपड़ों के निर्माण का वीडियो निकालने गए इस शख्स को धमकी दे रहे इस प्यादे को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, यह खुद अपने आप में सारी साजिश को बयान करने के लिए काफी है। जिन मोहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके चेहरे भी हम आपके सामने लाए देते हैं। रॉयल पंप के अंदर छोटा मोटा कब्जा भी लोग करते हैं, जगह बेगा कब्जा कर उसमें घर बांधते हैं, घर बांध के और ये लोग बेचते हैं। अभी 2 लाख में घर बांधते हैं, छोटा घर बांधते, झाड़ वेट काट के ये सब जंगल में घर बांधते हैं, घर बांध के लोग 10-12 लाख में बेच देते हैं।
वो भी लोग काम करते हैं ऐसा। फिर वो रॉयल पंप में जो भी जगह छोटा मोटा जगह जला के लोग उसमें बंगला बांधते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं। फिर बोलते फिर फंस गया तो रॉयल पंप के अंडर काम करते, फंस गया तो ट्रस्ट का नाम पे लेते हैं, मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ वैसा। फिर बाद में बोलते मैं रॉयल पंप के अंडर काम कर रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। As an investigative psychologist, the responsibility for the compromised road and the damage to the eco-sensitive zone could be attributed to various stakeholders. The government might be faulted for insufficient road development, while Akhtar Ansari may be held accountable for dumping debris on the road, leading to its destruction and environmental consequences. Additionally, scrutiny should be directed towards environmentalists, examining whether their focus on particular issues is influenced by the political considerations. The decision on attributing blame can be complex, requiring a thorough investigation into the actions and motivations of each party involved. Signing off, Rashi Shetty.